Assalamu alaikum students. In previous video we were discussing the methods of immobilization of enzymes, in which we had learned the reversible methods of immobilization and irreversible methods of immobilization. This video In this video lecture we will continue our discussion on the irreversible enzyme immobilization techniques. In the previous lecture, we had learned the covalent bonding or covalent interaction, which is the first method of irreversible enzyme immobilization. Today, we will continue our discussion on the remaining three methods for irreversible enzyme immobilization. That includes entrapment, cross-linking, and microencapsulation or encapsulation. And then we'll discuss the applications of immobilized enzymes. So let's first start with the second method of irreversible immobilization technique, which is called as entrapment. The entrapment method is based on the occlusion of an enzyme within a polymeric network that allows the substrate and products to pass through but retains the enzymes. This method differs from the coupling methods described previously, in that the enzyme is not bound to the matrix or membrane. There are different approaches to entrapping enzymes, such as gel or fiber entrapping and microencapsulation. The practical use of these methods is limited by mass transfer limitations through membrane or gels. Entrapment मेथड बेस करता है एंजाइम ऑक्लूजन पे. एंजाइम पॉलीमेरिक नेटवर्क में या विद इन अ पॉलीमेरिक नेटवर्क ऑक्लूड होता है, जो एक्चुअली अलाउ करता है सबस्ट्रेट को और प्रोडक्ट्स को टू पास थ्रू, लेकिन एंजाइम रिटेन रहता है. पॉलीमेरिक नेटवर्क अलाउ करता है सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट्स को कि वो पास हो जाएं, लेकिन एंजाइम को रिटेन रखता है. ये मेथड डिफ़र करता है बाकी कपलिंग मेथड्स से इस तरह से कि इसमें एंजाइम एक्चुअली मैट्रिक्स मेम्ब्रेन के साथ बाइंड नहीं है. मैट्रिक्स के साथ या मेम्ब्रेन के साथ ये जो भी पॉलीमेरिक सपोर्ट या सपोर्ट मटेरियल यूटिलाइज़ किया जा रहा है, उसके साथ एंजाइम केमिकली लिंक्ड नहीं है या बाउंड नहीं है. इनफैक्ट इट इज़ इंट्रैप्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया. डिफरेंट अप्रोचेस हैं इंट्रैपमेंट के लिए, एंजाइम इंट्रैपमेंट के लिए, जैसे कि जेल या फिर फाइबर इंट्रैपिंग या माइक्रो इनकैप्सुलेशन. प्रैक्टिकल यूज़ इन मेथड का लिमिटेड है टू द मास ट्रांसफ़र लिमिटेशंस थ्रू मेम्ब्रेन्स और जेल्स. Crosslinking is another irreversible method of enzyme immobilization that does not require a support to prevent enzyme loss into the substrate solution. The method is also called carrier-free immobilization, where the enzyme acts as its own carrier and virtually pure enzyme is obtained, eliminating the advantages and disadvantages associated with the carriers. The use of carrier inevitably leads to dilution of activity owing to the introduction of large portions of non-catalytic ballast. The percentage of ballast used can range from 90% to over 99%, resulting in low space-time yields as well as being costly. Technically, cross-linking is performed by formation of intermolecular cross-linkages between the enzyme molecules by means of bi- or multifunctional reagents. The most commonly used cross-linking reagent is glutaraldehyde, as it is economical and easily obtainable in large quantities. It has been used for decades for cross-linking proteins via reaction of the free amino acid groups of lysine residues on the surface of neighboring enzyme molecules with oligomers or polymers of glutaraldehyde resulting from inter- and intramolecular aldol condensations. क्रॉस-लिंकिंग एक और मेथड है इरिवर्सिबल एंजाइम इमोबिलाइजेशन का, जो कि एंजाइम सपोर्ट रिक्वायर नहीं करता या फिर सपोर्ट को प्रिवेंट करता है एंजाइम लॉस से इनटू द सबस्ट्रेट सॉल्यूशन.
इस मेथड के अंदर कैरियर फ्री इमोबिलाइजेशन होती है, जहाँ पर एंजाइम्स एक्ट करते हैं एज देयर ओन कैरियर्स, और प्योर एंजाइम्स ऑब्टेन होते हैं जो कि एलिमिनेट करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जो कैरियर्स के साथ एसोसिएटेड है। कैरियर्स का यूज़ इनएविटेबली लीड करता है डाइल्यूशन ऑफ एक्टिविटी को, दैट रिजल्ट्स इनटू द इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज पोर्शंस ऑफ नॉन कैटालाइटिक बैलेस्ट। जैसे जैसे परसेंटेज बैलेस्ट की इंक्रीज़ होती रहती है, दैट रेंजेस फ्रॉम 90 टू ओवर 99%, ये रिज़ल्ट करते हैं लो स्पेस टाइम यील्ड्स को, और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। टेक्निकली क्रॉस लिंकिंग को परफॉर्म करने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस लिंकेजेस फॉर्म होते हैं बिटवीन एंजाइम मॉलिक्यूल्स by means of bi or multifunctional reagents. Most commonly used cross-linking reagent glutaraldehyde है because of its economic value and क्योंकि easily obtain हो जाता है large quantities में. It has been used for decades for cross-linking proteins, जिसमें free amino groups lysine residues के react करते हैं surface of neighboring enzyme molecules पर with oligomers or polymers of glutaraldehyde that results in the inter or intramolecular aldol condensations. Immobilization by encapsulation represents an entrapment method in which enzymes are enclosed in a spherical or semi-permeable membrane. The membrane may be polymeric, lipoidal, lipoprotein based on non-ionic in nature. In general, there are two methods of microencapsulation. One is coagulation or phase separation, in which enzyme microdroplets are separated out in a water immiscible solvent, and interfacial polymerization, in which a monomer is made to be polymerized at the interface of two immiscible substances, a hydrophilic monomer and another monomer which is dispersed in a water immiscible solvent. This polymerization process results in the occlusion of enzyme within the polymeric membrane. The immobilization principle is based on the difference in size of enzyme and substrate or product molecules in comparison with membrane pore size. The membrane allows small sized molecules such as substrate or product to diffuse in and out of the membrane, while retains larger size enzyme molecules within. Therefore, enzyme molecules are confined by the membrane and are free floating inside the capsule. इनकैप्सुलेशन के थ्रू इमोबिलाइजेशन करना एक और मेथड है जो रिप्रेजेंट करता है इंट्रैपमेंट मेथड को, जिसके अंदर एंजाइम्स इनक्लोज होते हैं एक स्फेरिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में. मेम्ब्रेन मोस्टली पॉलीमेरिक होती है या लिपोइडल होती है या लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, बेस्ड ऑन नॉन आयनिक और आयनिक इन नेचर. In general, there are two methods of microencapsulation, coagulation या फिर phase separation, जिसके अंदर enzyme micro droplets की form के अंदर separate out होता है in a water immiscible solvent. और second method is called as interfacial polymerization, जिसके अंदर monomer बनाया जाता है जिसे पॉलीमराइज किया जाता है at the interface of two immiscible substances, hydrophobic monomer and another monomer which is dispersed in a water miscible solvent. ये polymerization process result करता है in the occlusion of enzyme within the polymeric membrane. Immobilization principle base करता है on the difference in size of the enzyme and substrate और product molecules जो कि कंपेयर किया जाता है विद मेम्ब्रेन पोर साइज. मेम्ब्रेन ये अलाउ करती है कि स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स लाइक सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट्स डिफ्यूज इन और आउट हो मेम्ब्रेन से, जबकि लार्ज साइज एंजाइम मॉलिक्यूल्स रिटेन रहें. इसी वजह से एंजाइम मॉलिक्यूल्स कन्फाइंड रहते हैं मेम्ब्रेन में और फ्री फ्लोइंग होते हैं या फ्री फ्लोटिंग होते हैं इनसाइड द कैप्सूल. Another method which is used for immobilization or irreversible immobilization is site-specific immobilization.
Three different approaches are used in this method. In first approach, gene fusion to incorporate a peptide affinity tag at the N or C terminus of the enzyme. The enzymes are then attached from this affinity tag to anti-tag antibodies or membranes. In second approach, modification is done to incorporate a single biotin molecule or enzyme that you can see here in this diagram. And the third approach is site-directed mutagenesis to introduce unique cysteines to the enzyme. The enzymes are attached on thiol reactive surfaces through the sulfhydryl groups. साइट स्पेसिफिक इमोबिलाइजेशन के लिए 3 टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं. पहली टेक्निक के अंदर जीन फ्यूजन होती है ताकि पेप्टाइड एफिनिटी इनकॉर्पोरेट की जा सके एट एन और सी टर्मिनस ऑफ द एंजाइम. एंजाइम्स को जीन फ्यूजन के बाद अटैच किया जाता है फ्रॉम दिस एफिनिटी टैग टू एंटी टैग एंटीबॉडीज़ ऑन द मेम्ब्रेन्स. सेकेंड अप्रोच के अंदर मॉडिफिकेशन की जाती है इन ऑर्डर टू incorporate a single biotin molecule on the enzymes. And third approach में site directed mutagenesis होती है to introduce unique cysteines to the enzyme. Enzymes attach होते हैं on thiol reactive surfaces through sulfhydryl groups. So this was all the classes of or methods of enzyme immobilization. Let's move on to the applications of immobilized enzyme. Presently, immobilized proteins or enzymes used routinely in the medical field, such as in the diagnosis and treatment of various diseases. Broadly speaking, the applications of immobilized enzymes range from industrial production, where industrial production of antibiotics, beverages, amino acids, etc. uses immobilized enzymes or whole cells. The second application is biomedical application of immobilized enzyme. Immobilized enzymes are widely used in the diagnosis and treatment of many diseases. Immobilized enzymes can be used to overcome inborn metabolic disorders by the supply of immobilized enzymes. Immobilization techniques are effectively used in drug delivery systems, especially to oncogenic sites. The third application of these enzymes is in food industry. Enzymes like pectinases and cellulases immobilized on suitable carriers are successfully used in the production of jams, jellies, and syrups from fruits and vegetables. Fourth application is in research. A research activity extensively uses many enzymes. The use of immobilized enzymes allows researchers to increase the efficiency of different enzymes such as horseradish peroxidase in blotting experiments and different proteases for cell or organelle lysis. Fifth application is in the production of biodiesel from vegetable oils. Immobilized enzymes are used in wastewater management for treatment of sewage and industrial effluents. They are also used in textile industry for scoring, biopolishing, and desizing of fabrics. And they have an application in detergent industry as well, where immobilization of lipase enzyme for effective dirt removal from clothes is done. Immobilized enzyme की different applications हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर एंटीबायोटिक्स की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर बेवरेजेस या अमीनो एसिड्स की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर इमोबिलाइज एंजाइम्स या होल सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं. बायोमेडिकल एप्लीकेशंस इमोबिलाइज एंजाइम्स की डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के अंदर हैं. डिफरेंट डिजीज़ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए इमोबिलाइज एंजाइम्स यूज़ होते हैं एंड they can be used to overcome inborn metabolic disorders. इमोबिलाइजेशन टेक्निक को इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाता है ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, स्पेशली ऑन्कोजेनिक साइट्स पर.
फूड इंडस्ट्री के अंदर एंजाइम्स की एप्लीकेशन है, लाइक पैक्टिनेजेस या सेल्यूलेजेस यूज़ किए जाते हैं ऑन सूटेबल कैरियर्स, जो कि सक्सेसफुल प्रोडक्शन करते हैं जैम्स, जेली, सिरप्स की फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रिसर्च के अंदर इमोबिलाइज एंजाइम की एप्लीकेशन एक्सटेंसिव है। इमोबिलाइज एंजाइम्स ये अलाउ करते हैं रिसर्चर्स को कि वो एफिशिएंसी डिफरेंट एंजाइम्स की इंक्रीज़ करें, लाइक हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज ब्लॉटिंग में यूज़ होता है, ब्लॉटिंग एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होता है, और डिफरेंट प्रोटीएजेस सेल और ऑर्गेनील लाइसेस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। बायोडीज़ल की प्रोडक्शन के अंदर वेजिटेबल्स ऑयल से बायोडीज़ल की प्रोडक्शन के लिए इमोबिलाइज एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में इमोबिलाइज एंजाइम का इस्तेमाल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर स्कोरिंग में या बायो पॉलिशिंग में या डीसाइजिंग के लिए फैब्रिक की इमोबिलाइज एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जाता है। और डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर लैपेज एंजाइम्स यूज़ होते हैं फॉर इफेक्टिव डर्ट रिमूवल फ्रॉम क्लोथ्स. So we'll discuss the biomedical applications in detail. Enzyme-based electrodes represents a major application of immobilized enzymes in medicines. The high specificity and reactivity of an enzyme towards its substrate are properties being exploited in biosensor technology. Biosensors possesses advantages such as reliability, sensitivity, accuracy, and ease of handling, and low cost compared with conventional detection methods. These characteristics, in combination with the unique properties of an enzyme, render an enzyme-based biosensor ideal for biomedical applications. There are certain examples of sensors and enzymes listed over here. Like for the sensing of glucose, glucose oxidase is used, or glucose dehydrogenase is utilized. Lactase oxidase sense the lactate part. Urease is used for sensing urea. Carnitine dehydrogenase and diphorase used for carnitine, and cholesterol oxidase is used for the sensing of cholesterol. Acetylcholine esterase and choline oxidase is used for acetylcholine and choline. The technique that is used by biosensors is described here in this diagram. An analyte is used on the biological component. A transducer is used to amplify. A transducer is used to detect this analyte, and it is then amplified and processed. Signal is then amplified and processed and displayed on a digital display meter. एंजाइम बेस्ड इलेक्ट्रोड्स रिप्रेजेंट करते हैं एक मेजर एप्लीकेशन को बाय इमोबिलाइज एंजाइम की मेडिसिन के अंदर या बायोमेडिसिन के अंदर। हाई स्पेसिफिसिटी और रिएक्टिविटी एंजाइम की टूवर्ड्स इट्स सबस्ट्रेट ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यूटिलाइज करके बायोसेंसर टेक्नोलॉजी को बनाया जा सकता है। बायोसेंसर्स ये एडवांटेजेस पजेस करते हैं कि इनमें रिलायबिलिटी होती है, सेंसिटिविटी होती है, इसके अलावा एक्यूरेसी और ईज़ ऑफ हैंडलिंग होती है, और लो कॉस्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी कन्वेंशनल डिटेक्शन मेथड्स। इन्हीं कैरेक्टराइज को यूटिलाइज करते हुए इन कम्बिनेशन विद यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एंजाइम, एक एंजाइम बेस्ड बायोसेंसर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक रखता है फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस। In addition to the electrochemical transduction systems, interest in optical biosensors based on immobilized enzymes has also been gradually growing. An optical biosensor is a compact analytical device containing a biorecognition sensing element integrated with an optical transducer system. The basic objective of an optical biosensor is to produce a signal which is proportionate to the concentration of a measured substance or analyte. Immobilization techniques used in optical sensors include adsorption, physical entrapment, and photocontrolled polymerization.
The sol gel method of entrapping enzymes in transparent silicate matrices is especially suitable in optical biosensors because it allows for the monitoring of chemical reaction of immobilized proteins by changes in the visible absorption spectra. इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसडक्शन सिस्टम्स के साथ साथ ऑप्टिकल बायोसेंसर्स यूज़ किए जाते हैं बेस्ड ऑन इमोबिलाइज एंजाइम्स. एक ऑप्टिकल बायोसेंसर एक कॉम्पैक्ट एनालिटिकल डिवाइस होती है जिसके अंदर बायो रिकग्निशन सेंसिंग एलिमेंट अटैच होता है जो कि इंटीग्रेट होता है विद एन ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर सिस्टम. बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑप्टिकल बायोसेंसर का सिग्नल की प्रोडक्शन है जो कि प्रोपोर्शनेट होते हैं टू द कंसंट्रेशन ऑफ द मेजर्ड सब्सटेंस या एनालाइट की. इमोबिलाइजेशन टेक्निक्स जो ऑप्टिकल सेंसर्स में यूज़ की जाती हैं वो एड्जॉर्प्शन है, फिजिकल एंट्रैपमेंट है और फोटो कंट्रोल पॉलीमराइजेशन है. सोल जेल मेथड एंजाइम्स को इंट्रैप करने के लिए ट्रांसपेरेंट सिलिकेट मैट्रिसेस में स्पेशली सूटेबल है इन ऑप्टिकल बायोसेंसर्स बिकॉज ये अलाउ करता है केमिकल रिएक्शंस जो इमोबिलाइज प्रोटीन्स के अंदर अकर हो रहे होते हैं उनको मॉनिटर करना बाय चेंजेस इन द विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. Biosensors, in addition to the benefits of simplifying existing biochemical measurements, offer the advantage of allowing continuous and real-time monitoring. In addition to their main function in monitoring the rapid changes in blood analyte concentrations, biosensors provide an essential element to the development of artificial biofeedback systems that are useful in blood glucose control, drug dosing and administration, and intravenous infusion of nutrients. In general, devices in clinical use can be classified into three categories based on their size and site of applications: bedside units, wearable modules, and implantable devices. The bedside unit is a rather large and complex device containing a miniaturized sensor system used in the hospitals or intensive care units. Wearable modules can be attached to certain parts of the patient's body and are presently used in research for short-term monitoring of certain clinical entities. Implantable devices offer the convenience of being used as either a monitoring or an alarm device for continuous detection of certain substance level in vivo. However, issues such as biocompatibility, generation of immune response to the sensor, and long-term fouling of the electrode and the need for frequent calibration still remains as major concerns for the successful application of implantable biosensors in vivo. At the present, enzyme immobilized sensors capable of monitoring a variety of more than 10 different substances have already been commercialized, and a significant amount of effort is underway to further broaden the scope of applications. Biosensors, in addition to the benefits of simplifying existing biochemical requirements, offer करते हैं एक advantage जो allow करता है continuous और real time monitoring को. मेन फंक्शन के साथ साथ जो कि मेन फंक्शन मॉनिटरिंग में है, मॉनिटरिंग करना रैपिड चेंजेस इन ब्लड एनालाइट कंसंट्रेशन, इसके साथ साथ बायोसेंसर्स प्रोवाइड करते हैं एक एसेंशियल एलिमेंट जो कि आर्टिफिशियल बायोफीडबैक सिस्टम की डेवलपमेंट है. ये आर्टिफिशियल बायोफीडबैक सिस्टम यूज़फुल होता है ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में, ड्रग डोजिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसके अलावा इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के लिए न्यूट्रिएंट्स की. जनरली क्लिनिकल यूज़ के अंदर जो डिवाइसेस हैं उन्हें हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी देयर साइज़ एंड साइट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि बेड साइड यूनिट्स कहलाते हैं, वेरेबल मॉड्यूल्स कहलाते हैं और इम्प्लांटेबल डिवाइसेस कहलाते हैं. बेड साइड यूनिट्स इज़ रादर अ लार्ज और कॉम्प्लेक्स डिवाइस है जिसके अंदर मिनिएचर सेंसर सिस्टम्स लगे होते हैं और ये यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में या फिर इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर. वेरेबल मॉड्यूल्स
को अटैच किया जा सकता है टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ द पेशेंट्स बॉडी। प्रेजेंटली इनका यूज़ रिसर्च में है फॉर शॉर्ट टर्म मॉनिटरिंग ऑफ सर्टेन क्लिनिकल एंटिटीज़। इम्प्लांटेबल डिवाइसेस कन्वीनियंस ऑफर करती हैं एंड दे आर यूज्ड एज ईदर फॉर मॉनिटरिंग या फिर एक अलार्म डिवाइस का काम करती है जो कि कंटिन्यूसली डिटेक्ट करता है सर्टेन सब्सटेंस लेवल्स को इन वीवो। कंटिन्यूटी के साथ साथ और डिटेक्शन सब्सटेंस लेवल की सर्टेन सब्सटेंस लेवल की करने के साथ साथ स्टिल इसके कुछ इश्यूज हैं लाइक बायोकम्पैटिबिलिटी। इसके अलावा इम्प्लांटेबल डिवाइसेस इम्यून रिस्पॉन्सेस जनरेट करवा सकती हैं। लॉन्ग टर्म फाउलिंग हो सकती है इलेक्ट्रोड की। और जो मेजर ड्रॉबैक है या जो इशू टू एड्रेस है वो है नीड फॉर फ्रीक्वेंट कैलिब्रेशन। जो मेजर कंसर्न है फॉर सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ इम्प्लांटेबल बायोसेंसर्स इन वीवो। इस वक्त एंजाइम इमोबिलाइज्ड बायोसेंसर्स जो कि केपेबल हैं मोर देन 10 डिफरेंट डिजीज़ या सब्सटेंसेस को मॉनिटर करने के लिए वो कमर्शलाइज है एंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट इज़ अंडरवे टू फर्दर ब्रॉडन द स्कोप ऑफ एप्लीकेशंस। So in conclusion, commercial scale enzyme catalysis has been implemented in several industries such as pharmaceutical and foods, with recent trends for biofuel production and natural gas conversion. Product yield in such industries was shown to be governed by enzymatic catalysis being implemented in milder process conditions and under less energy consumption, with reduced waste generation, exceptional high product selectivity to result in improvements in process economics and environmental sustainability. The scale-up of enzymatic processes is, however, largely hampered by limitations in biocatalyst stability. To that end, enzyme immobilization was proposed and researched as an attractive approach for expanding the scope of enzyme catalysis and improve process efficiency. Critical examination of strategies for immobilization are still need to facilitate the development of optical enzymes, while holistic knowledge of economic driving forces to surround process development are still required for appropriateness of enzyme catalysis implementation in commercial scale processes. Successful industrial application of new generation immobilized biocatalysts ultimately will be defined by critical analysis of immobilized enzyme processes, where overlap of expertise in protein engineering, enzyme immobilization, process engineering, and life cycle analysis is paramount. Future implementation prospects will need to count for the structure-function relationships both at the level of the enzyme and the platform used in the immobilization, as well as the optimized product yield at low implementation costs, with conjunction of experimental and computational approaches for an integrated combinatorial strategy. Let's call it a day. Thank you for listening to this video. Take care of yourself. Allah Hafiz.